requirements. How is the operation of the Bnwas series of alarms and indication we saw? Are we clear about the working of the Bnwas? Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I get a yes. Deepak? Deepak? Yes, sir. Deepak, what is dormant period and what do you mean by that as related to Bnwas? So dormant period is that period that is first 30 seconds before 30 seconds? before that audio alarm. Sir, first 15 seconds before that audio alarm. First 15 seconds before the audio alarm. That is a visual indication, not dormant period. Shubham Sharma. Shubham Sharma. Okay, Pranshu, go ahead. Sir, dormant period is the period for which the Bnwas is set. For example, 3 minutes, 6 minutes, or 12 minutes, in which the officer on watch has to reset the timer, and as soon as the OW will reset it, the timer will start again, and went to zero back again. Very good. Good. Very good. What you said is 100% correct. It is the time of during which the system is doing nothing. Dormant means inactive. वो ऑन तो है बट इनएक्टिव रहता है, कुछ नहीं करता है. It is just counting time. 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, which is anything between 3 to 12 minutes as set by the master. So it is the inactive period during which the Bnwas will do nothing but just count time. ठीक है? Prakhar, what is the first stage alarm? Sir, good morning, sir. Sir, the first stage alarm will is the visual indication of the alarm, which will be in the 15 minutes. It is in 15 seconds in the indicator button. After that, the first stage alarm will ring in the bridge, and we have to reset it. If it is not reset in the 15 seconds, then the second stage alarm will come in other cabins of the other duty officers, masters. As well as common spaces in some ships. Depending on other spaces on ships, as you said, we have a condition for that. So we'll be talking about that. Remember, visual indication is not the first stage alarm. It is the audio alarm that is considered as first stage alarm in the bridge, in the cabins, then third in the alleyway. First stage alarm in the bridge, second stage alarm in the cabins, third stage alarm in the alleyways or common areas. Understood? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we had seen the function, and then later on we started seeing the other requirements, IMO performance standard requirements. Pranshu, you can switch off your microphone. So we talked about some of the requirements, like operation of the Bnwas as to when it should be in operation. उसके बारे में detailed discussion हुई. There, the IMO says that it should be on whenever the ship is underway at sea. But we have seen that it can be put on at other times also when not underway, like anchor watch and all that. So it is left to the master's judgment when he wants to switch it on or when he wants it off. We saw modes of operation, automatic mode, manual on, manual off, the three modes, in which we have seen that it is discouraged to operate it in automatic mode. Manual mode is more preferable mode, left to the master as to when he deems it necessary that it should be switched on. When he thinks it is okay to switch off, he can switch off. We saw
battery power requirements or power requirements for the Bnwas. So Parth Negi, what is the power requirement? Sir, 6 hours after power failure. Okay. Normal operation through ship's main supply. When power failure is there, there should be a battery backup or reserve source of power for at least 6 hours of operation of Bnwas. Very good. Then we also talked about emergency calling facility, that there has to be a provision in the system using which the officer on watch can call for help. Call for help, he can call the master. So either there will be a push button provided, a dedicated button provided for emergency calling, or alternately it is integrated in the reset switch itself. Prateek, how it is integrated with the reset switch, this emergency calling? उसी से reset, उसी से emergency calling कैसे हो रहा है? Sir, by pressing it for more than 5 seconds. Very good. Long press, emergency call, short press, reset. जैसा हमारे मोबाइल में भी होता है, बटन दबाएं, अगर इतनी देर दबाया तो कुछ, थोड़ा और लंबा किया तो कुछ, और लंबा किया तो कुछ, तीन एक्शन होता है एक ही बटन पे. जैसे ए पे दबाएंगे तो सिंगल क्लिक पे एक दबेगा, दूसरे क्लिक पे ए के ऊपर टिल्ड कुछ दूसरा एक्सेंटेड आएगा, फिर और कुछ आएगा ऐसा. So multiple characters can be typed using the mobile keys. Similarly, here only two functions required: single press, reset, long press, emergency calling. So this was emergency calling. उसके बाद हमने बात किया था the 5 points about reset. The reset function, क्या क्या चीजें बातें हुई थी? Number 1, it should be easily accessible. That means multiple points, reset points in the bridge. Number 2, it should be located only in the areas from where navigation watch is carried out. डिटेल में बात हुई थी, चार्ट टेबल और ये सब बात हुई थी. Number 3, single operator action of the reset button should cancel out all the alarms and indication and bring the system to 00 and a new cycle of dormant period and subsequent alarms start. That was third point. Fourth point, that it should be protected against prolonged activation. Reset point को prolonged activation से ऐसा नहीं हो कि वो dormant period को disturb करे या alarms indication को disturb करे. If you are pressing it for long time, it should be protected against that function. तो उसको हमने कैसे protect किया? How the system is protected from prolonged activation of the reset points? Yes. There is if we press very more than 5 seconds, it will call emergency call. Yes, very good, very good. That means prolonged press पे इमरजेंसी कॉल का फंक्शन डाल दिया, तो आप दबाने जाओगे तो इमरजेंसी कॉल हो जाएगी. जिस चीज से बचना चाहते थे आराम करने के लिए, और सब लोग दौड़ के आ जाएंगे डंडा बजाने के लिए. So this is how this particular function is tackled. The next one is that resetting can be done by other devices or equipment which can register bridge activity or operator activity, like computers, mostly the navigational computers like ECDIS or maybe radar ARPA. So वहां पे आप क्लिक कर रहे हैं, लाइंस खींच रहे हैं, EBL चेंज कर रहे हैं, रेंज रिंग्स VRM चेंज कर रहे हैं. आपके इन सब एक्टिविटीज का फीड डायरेक्टली जाता रहता है बनवास को, और आपके हर एक्शन पे वो रिसेट होकर 0 पे आ जाता है, हर एक्शन पे रिसेट हो जाता है. So you don't need necessarily to go and change it. So these are the things that we talked about. We will talk about few more requirements of the functional requirements of the Bnwas. We'll go to the slides for this purpose and we will take it
from there itself. So allow me to share the screen. Give me a moment while I open the file. Bnwas. Yes. All right, sharing the screen now. So this was the last slide that we had seen, and we just talked also. The reset of the Bnwas may be achieved by other devices or equipment which can register bridge activity or operator activity. Next is accuracy. We have talked about different times like dormant period, which can last from 3 minutes to 12 minutes. We saw that visual indication would last for 15 seconds. After 15 seconds, if not reset, it will go to first stage alarm, which is also for 15 seconds. If it is not reset within first stage alarm, then it will go to second stage alarm, which is for 90 seconds. If not reset, then it will go to third stage alarm, which is the general watchkeeping alarm, which will go continuously till it is reset. So the time is that we are talking about, is it fixed or there can be plus minus little bit? Of course, there is little bit of plus minus allowed, although 15 seconds, लेकिन थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. Dormant period, let us say 12 minutes. Yes, थोड़ा बहुत 12 minutes से ज़्यादा या 12 minutes से कम हो सकता है. But how much is that? It is 5% of the time we are talking about, or 5 seconds, whichever is less. So let us talk, for example, about dormant period. We have set the dormant period for 12 minutes. So 12 minute का 5% कितना होगा? How much of time will be that? 6 seconds. 36 seconds. So compare 5%, which is 36 seconds, and 5 seconds. Which one is less? Of course, 5 seconds. 5 seconds. That means the visual indication after the dormant period can start anywhere in between 11 minutes 55 seconds to 12 minutes 5 seconds. अगर 12 मिनट का सेट कर रखा है तो 5 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है. 12 मिनट 5 सेकंड के भीतर कभी भी, या 11 मिनट 55 सेकंड के भीतर कभी भी. Anywhere in this 10 minutes, the visual indication may start plus minus. Another example, if we take 90 seconds of second stage alarm, जिसके बाद third stage alarm बजता है. So calculate and tell me what will be the limit within which the third stage alarm will sound. कितना प्लस माइनस हो सकता है, कितने से कितने मिनट के बीच में और सेकंड्स के बीच में थर्ड स्टेज अलार्म में बी जनरेटेड? 4.5 seconds plus minus. कितना? 4.5 seconds, right? So 5% of 90 seconds is 4.5 seconds. Compare that with 5 seconds. Of course, 4.5 is less than 5. So plus minus 4.5 seconds हो सकता है. That means third stage alarm may start any time in between 85.5 minutes से लेके 94.5 seconds तक. कभी भी थर्ड स्टेज अलार्म में स्टार्ट.
So that's about accuracy. Understood? Or any confusion? ज्यादा होगा तो ही प्रॉब्लम है ना, कम होगा तो प्रॉब्लम थोड़ी। मतलब 12 से कम होगा तो T से 12 तक कुछ भी सेट कर सकते हैं ना। ओके, प्रॉब्लम कम में नहीं है, ज्यादा में हो सकता है जैसा आपने कहा, बट दीज आर द रेगुलेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट। होने का कुछ हो सर सकता है, वो बट दीज आर द रेगुलेशंस। सर वो समझ में नहीं आया। जैसे 12 मिनट का आपने निकाला, वो 5% तो 36 सेकंड कुछ आया। ओके, पढ़ो जो स्क्रीन पे है, पढ़ो धीरे धीरे आराम से समझ के पढ़ना, सुनाने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ना। रीड। ओके सर। पढ़े? यस सर, 5 सेकंड ही, और whichever is less। whichever is less। तो Okay, sir. 12 मिनट का 5% और 5 सेकंड कौन सा कम पड़ता है? 5 सेकंड। तो प्लस माइनस 5 सेकंड हो सकता है ना 12 मिनट से। हाँ सर। जैसे मैंने आपको कहा कि 11:30 बजे क्लास शुरू होगी, 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। यस सर। तो आप 11:05 पे भी आ सकते हो और 10:55 पे भी आ सकते हो। सही है ना? प्लस माइनस 5 मिनट का टाइम दे दिया आपको। तो यस सर। सेम इज द केस हियर कि डॉर्मेंट पीरियड के बाद अगला स्टेज क्या आता है? क्या चीज होती है डॉर्मेंट पीरियड खत्म होने के बाद? विजुअल। Visual indication. तो ये विजुअल इंडिकेशन कब शुरू हो सकता है डॉर्मेंट पीरियड के बाद? प्लस माइनस 5 सेकंड। Yes, now you understood. 50 Understood? यस सर। Clear? Clear, सर sir. ये जैसे फर्स्ट 12 मिनट्स 5 सेकंड्स हैं, तो अगर 5 सेकंड्स के बाद मतलब 12 मिनट्स 4 सेकंड्स पे अलार्म हुआ, तो विजुअल इंडिकेशन के 15 सेकंड्स में ये 4 सेकंड्स इंक्लूड होंगे? नहीं, वो अपना 15 सेकंड का उसका विजुअल इंडिकेशन है। तो वो मान लो कि 12 मिनट 4 सेकंड पे शुरू हुआ इंडिकेशन, तो वो 15 सेकंड का इंडिकेशन जाएगा। 15 सेकंड में प्लस माइनस कैसे हो सकती है? 5% या 5 सेकंड्स whichever is less। तो 15 सेकंड का 5% कितना होगा? जो भी होगा, डेफिनेटली आई थिंक 0.45 सेकंड्स और 0.45 सेकंड्स होगा। करेक्ट? यस सर। Okay, whatever, 5%, that will definitely be less than 5 seconds. So visual indication 15 सेकंड का होगा, लेकिन प्लस माइनस आधा सेकंड के बाद फर्स्ट स्टेज अलार्म शुरू हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज अलार्म 15 सेकंड का खुद है, उसमें भी प्लस माइनस हो सकता है 5% और 5 सेकंड्स। उसके बाद 90 सेकंड्स है, वो 90 सेकंड्स में भी प्लस माइनस हो सकता है। अंडरस्टूड? सर वो तो Yes, sir. एक्यूरेसी है ना। 5 सेकंड आगे पीछे हो सकता है। हाँ, 5 सेकंड या 5%, जो भी कम पड़ेगा उतना आगे पीछे हो सकता है। हाँ सर। Next, the system should be secured by means of a password or a key switch. The operation of the Bnwas is placed under the authority of the master. Only master can operate, or another authorized person can operate it. That means the system is protected by that switch. चाबी डाला, चेंज मोड में डाला, उसको ऑन किया, सेटिंग्स वगैरह करी, चाबी निकाल के लेके चले। Now it cannot be switched off. If you want to switch it off or change anything like dormant period you want to change, you will require that key. So the master will come, he will put the key, put it to change mode, and then alter this and again take the key with him. So system should be protected. The sequence of alarm in the cabins, the sequence of backup officers, क्योंकि normally थर्ड मेट होगा, उसके बाद उसका बैकअप ऑफिसर सेकंड मेट होगा, सेकंड मेट के बाद चीफ मेट आएंगे, तो सेकंड मेट का बैकअप ऑफिसर चीफ मेट होगा। तो किसके कैबिन में
कब अलार्म बजेगी, किस सीक्वेंस में बजेगी, that also can be adjusted. All this will be done only by the master. ठीक है? So it is Yes, system sir. protected either by password or by key switch. Then there is another number 8 malfunction alarm. Malfunction में क्या होगा? तो एक पावर फेलियर हो सकती है या सिस्टम काम करना बंद कर सकता है, कुछ डिटेक्ट हो सकती है प्रॉब्लम। तो पावर फेलियर हो तो भी अलार्म आएगी, या कुछ मैलफंक्शन हो सिस्टम में तो भी वो अलार्म आएगी कि देयर इज सम मैलफंक्शन। रिमेंबर, जितने सारे इक्विपमेंट हैं इन द ब्रिज, they are all having this feature that if they are failing to work, if they are having some kind of problem, then there will be alarm. अगर वीडीआर काम करना बंद कर दे या कुछ प्रॉब्लम है, अलार्म बजेगा। जीपीएस काम करना बंद कर दे या कुछ प्रॉब्लम है, अलार्म बजेगा। इको साउंडर काम नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रहा है, अलार्म बज जाएगी। रडार, आरपा, एआईएस, एक्डिस, किसी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, then it will give an alarm so that you are aware कि इसमें प्रॉब्लम है, अभी इसको यूज नहीं करना है, इसके डेटा को यूज नहीं करना है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. All right. So that is point number 8. ये सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थे ऑफ द बनवास। ऑपरेशन कैसे हो, तो all that we talked about is the alarm sequence. Now coming to the last part of it, the carriage requirement. Who are required to carry Bnwas? Sir, Cargo slide. ship. जी बोलिए। Slide, sir. Slide मैंने चेंज किया। I am on 26. What are you seeing? Sir, security वाली ये लगी हुई है अभी भी। Okay, तो एक बार आओ। अच्छा रुको, अब देखो। हाँ सर, अभी आ गई। Okay. So carriage requirement. There are implementation plan. कोई भी नया रेगुलेशन आता है आईएमओ का, तो there is certain bit of time provided for implementation. So बनवास की implementation 2011 से शुरू हुई, although requirement came in 2008, but ships were given time till 1st of July 2011. Certain kind of ships. Which ships? Cargo ship of 150 GRT and upwards. And passenger ships, irrespective of size, they should fit Bnwas any time on or after, after 1st of July, constructed on or after 1st of July, they should be fitting this Bnwas. The ships which are older ships constructed before 1st of July 2011, they should be fitting this before 1st of July 2012. इस डेट के बाद जो भी पहली सर्वे पड़ेगी उस सर्वे में अप्रूव कराना है। मतलब अभी हम 2012 की बात कर रहे हैं, हम इन सब से बाहर निकल आएंगे, ये जो बात कर रहे हैं इन सबको हम साइड में कर देंगे। If I am a ship, if I am in 2012 and I have got my survey falling due in November 2012, I must fit the Bnwas before November 2012. That's my first survey after 1st of July 2012. जुलाई 2012 के बाद पहले जो सर्वे पड़ रही है मेरी, उस तक मुझको ये इंस्टॉल करवा लेना है। So not going too much into detail because अब हम 2021 में हैं, तो इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान का
requirement is over. So what we can do is go directly to the observation or final conclusion of Bnwas requirement. After 1st of July 2014, all passenger ships, no matter what the size, and all cargo vessels, including tankers, must be fitted with GRT if they are 150 sorry, क्या मैं बोल रहा हूँ? They should be fitted with Bnwas if their size is 150 GRT or above. Read the last line. Observation. Before that, it was all implementation plan. Certain kind of ships to be installing Bnwas by so and so date. Certain ships by so and so date. Certain ships by so and so date. लेकिन जुलाई 2014 के बाद ये implementation date का limit खत्म हो गया. After that, every required vessel should be compliant. And who are those vessels? 150 GRT and above cargo vessels and all passenger ships irrespective of their size. So are we good? Sir, please wait 1 minute, sir. Okay. Finished? Yes, sir. Yes, sir. Now next point. अभी हमने बहुत सारे requirements पढ़ी Bnwas की. Should be like this, should be like that, reset function like that, power requirement like that. इन सब में क्या deviations allowed? There are few changes which are possible. There are few deviations which are possible. Number one is that in big vessels, the second stage alarm, cabin alarms, जिसके बाद third stage alarm शुरू होता था, that can be extended up to 3 minutes. So 90 seconds था, that can be extended up to 180 seconds. Bigger ships, normally bigger accommodation. Bigger accommodation, that means more time taken to reach the bridge. So for those vessels which are considered big, the second stage alarm is extended up to, can be extended up to 180 seconds, giving more time to the master and backup officer to reach the bridge and take care of the situation. Now, which are bigger ships, large ships? It will be the judgment of the flag state. If the flag state says your ship is big enough, okay, you can increase it to 120 seconds, second stage alarm. So 90 seconds की जगह 120 seconds हो जाएगा. So IMO does not say anything about large ship or small ship, but it is left to the flag state to decide and judge whether the ship will be considered a larger vessel or a smaller vessel, जिसमें 90 seconds ही होना चाहिए. That's deviation number one. Other deviation, जो कि अभी कुछ देर पहले बताया भी था, जब मैं पूछ रहा था कि what are the stages of alarms.
in cargo ships only in the cargo ships, not passenger vessels. The second and third stage alarm may be combined together. मतलब ब्रिज से जो निकली तो कैबिन्स में और कॉमन एरियाज में एक साथ बज जाएगा. There is no first के बाद second and third stage alarm is not there. Second and third stage alarms are combined together. Because in the cargo ships, normally only professionals are there, like you and I. We are all working there. We are all aware of the workings of the ship. So in the cargo vessels condition, the second and third stage alarm can be combined. तो उसमें अलग अलग नहीं बजती. ब्रिज से निकला तो कॉमन एरियाज में एंड कैबिन्स में एक साथ अलार्म कैन गो ऑफ. In those conditions, it may be also possible that the cabin alarms are not necessarily provided. Common areas में ही provide किया होता है, which is loud enough to wake up anyone from their sleep. But then there may be also cabin alarms as well as the common area big alarm. So these are the two major deviations allowed. Other deviation we can note down as the accuracy का point जो किया था, उसमें भी plus minus है थोड़ा सा. But that was allowed limit. That can be included here, that this is possibility plus minus. जो 15 second था उसमें plus minus 5% of the time we are talking about or 5%, whichever is less. Plus minus हो सकता है. So these are the deviations allowed. Now here are few review questions for you. Take a look, verify your understanding, see that you are able to answer all these questions. Then we are done with the topic of Bnwas. First question, purpose of Bnwas. किसले? पांडे. Yes, sir. Purpose of Bnwas. क्या करता है बनवास? किस लिए लगाया हमने? सर ब्रिज नेविगेशन वॉच अलर्ट सिस्टम. अगर जैसे सर कोई सो रहा है या वॉच कीपिंग सही से नहीं कर रहा है तो वो सर अलर्ट सिस्टम देता है बीच बीच में, उसको हम लोग को बार बार रीसेट करना होता है. सिंपली पर्पस क्या है? मॉनिटर द ब्रिज एक्टिविटी एंड अलर्ट बैकअप ऑफिसर एंड मास्टर इन केस इट डिटेक्ट्स ऑपरेटर डिसेबिलिटी. जो आपने कहा वो सही है. Only I am structuring your answer in given words. Okay, sir. The purpose is to monitor the bridge activity. In case the system detects inactivity in the bridge, then it will alert the backup officer and master by means of series of alarms and indications. Good? Okay, sir. Yes, sir. Read all other questions and verify yourself that you are good with all these questions that you can answer. Are we all good? सर ये रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सर वो टाइमिंग का ही रिक्वायरमेंट है ना सर बेसिकली? नहीं कि इतने टाइम में रीसेट हो जाना चाहिए. नहीं, 5 पॉइंट आपने देखे थे. The reset point should be easily accessible. Okay. It should be placed only in the areas from where navigation watch is carried out. Single operation, single activity, single action of the button should bring the
system to 00 and reset and cancel all alarms indications. The reset can be done from any other device which can register bridge activity. Reset should be protected against prolonged activation. Okay, sir. Thank you. Got it. Understood? Yes, sir. तो देखो ना इसमें रीसेटिंग ऑफ द बनवास उसके बारे में क्या कहता है रिक्वायरमेंट्स. Yes, sir. Thank you. समझ गया सर. And sir, can you please also tell this answer of question number 3, this operation modes? Automatic, manual on, manual off. Thank you, sir. Understood? Yes, sir. Thank you, sir. और इसके थैंक यू की जरूरत नहीं है. जो ऑटोमेटिक मोड क्या होता है, मैनुअल ऑन क्या होता है, ये तीनों चीजें पता है आपको? Yes, sir. वेरी गुड. ऑटोमेटिक बताओ, ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है बनवास? बताओ ना, बताओ ना. What happens in automatic mode? तो जब वो ऑटो पायलट से में स्विच करते हैं. वो जवाब जिससे पूछा वो जवाब दे, जो क्वेश्चन कर रहे थे अभी. आई डोंट नो द नेम. हु वाज टॉकिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? क्वेश्चन 3 किसने पूछा था? अब बोल ना भाई, डरता क्यों है? Who asked me question number 3? डर के मारे सटक गया. क्यों भाई, बोलो तो सही. कोई बात नहीं सर, डर गया वो. डर गया सो मर गया. ओके, तो किसने बोला कि डर गया? अपना नाम बताओ. जितेंद्र. जितेंद्र तुम बताओ ऑटोमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? ऑटोमेटिक ऑपरेशन मोड सर, मोस्टली आपने बताया था कि या तो एक्डिस से कनेक्ट करते हैं, रडार से कनेक्ट करते हैं. तो जब भी अपन उसको यूज कर रहे हैं सर, तो वो नहीं, वो तो रीसेट के लिए बताया था ना. नहीं. कान पकड़ लो अपना, गलत हो गया. हाँ सर, ऑटोमेटिक मोड के लिए आपने ऑटो पायलट से बताया था सर. हाँ, वेरी गुड. जब भी अपन जहाज को ऑटो पायलट से हैंड स्टीयरिंग पे डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है. और उसके बाद में जब अपन हैंड से जब ऑटो में डालते हैं, तो वो ऑन हो जाता है. एग्जैक्टली, वो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन. वेरी गुड, वेल डन. So here we are. और कुछ क्वेश्चंस? बस इसी का वो नोट्स भेज दिए सर, एक बार अच्छे से पढ़ के पूरा नोट बनाना पड़ेगा. डेफिनेटली बनाना पड़ेगा, बट द प्रॉब्लम इज, अंजना मैम, आर यू देयर? अंजना मैम, आर यू देयर? ओके, अंजना मैम नहीं सुन रही है. आपके जो क्लास कोऑर्डिनेटर हैं वो मुझको ईमेल भेजेंगे. आपकी लिस्ट आएगी, कौन कौन से आप लोग, सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट आएगा, तो मैं आपको ईमेल भेज दूंगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, नोट्स भी होंगे, सारे टॉपिक्स के जितने टॉपिक्स हमने बात करी थी, जायरो कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ईएम लॉग, रोटी, बनवास, everything. So but it will take couple of days. By the time they are compiling all these emails and all that, जब मुझको ईमेल आ जाएगी तो मैं भेज दूंगा. राइट? ओके सर, नो प्रॉब्लम सर. उसको देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना उसके अकॉर्डिंग. यस, क्योंकि उसको ऐसे इस लैंग्वेज में तो लिख नहीं सकते ना सर, थोड़ा अपना लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ना उसको. अपने लैंग्वेज में लिखो, चाहे जैसे लिखो, जो बात बतानी है वो बतानी है क्लियरली कि एक चीज आप कह क्या रहे हैं. नहीं, जैसे आपका जो पूरा वो है सर, ये जो पीडीएफ बना हुआ है, जिस तरीके से आपने पढ़ाया है,
वो तो ठीक है, चलो समझ में आ रहा है सर, बस बट उसके एग्जैक्ट वर्ड तो हम लिख नहीं सकते ना सर पेपर में, जो भी आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डिपेंड कि जो मैंने स्लाइड पे लिखा है वो क्या लिखा है, जो मुझको नहीं समझ सर, आया वही चीज मैंने स्लाइड में लिखा है। जी सर, जैसे आपकी हेडिंग्स हैं वो तो हेडिंग्स तो हमारी सेम ही रहेंगी, जो भी है जितना भी है, लेकिन उसके बाद में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं ना सर, जैसे अपनी इजी लैंग्वेज में। बेधड़क कर सकते हैं। इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, यू आर गुड। आई डोंट बिलीव इन रिपीटिंग द सेम थिंग। किसी ने लिख दिया हम उसको रिपीट करते रहे, वो कोई जरूरत नहीं है। जिसने लिखा वो क्या लिख रहा है, किस चीज के बारे में, उसकी मेरी समझ क्या कहती है, कैसे मैं कहना चाहता हूँ, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो इन जनरल हाउ अ क्वेश्चंस आंसर कैन बी फॉर्म, वो भी मैं आपको भेजूंगा। यही क्वेश्चन होएगा, व्हाट आर द अलार्म स्टेजेस और ऑफ बनवास, तो उसको आंसर कैसे लिखेंगे, उसका मॉडल आंसर्स भी आपको मैं भेजूंगा। यू कैन लर्न फ्रॉम देयर, यू कैन सी फ्रॉम देयर कि कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद भी आप अलग करना चाहते हो तो करो, नो इश्यूज। लेकिन जो कंटेंट है, जो कहना चाहता है वही चीज आपको कहना है, दूसरे लैंग्वेज में कहिए, जैसे कहना कहिए,